In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all, students, in this lecture series program. And I have started a lecture series program on an introduction to linguistics subject, and this is our semester 1. This is lecture 1, of course. We have started to learn from the beginning, and this lecture is for those students who have been learning in BS English, MA English, or even this lecture is for those aspirants who have been preparing for lecturership. So let's study. This is the beginning topic. This is the beginning class that I have started, and this has been observed that most of the students face a perplexing situation to learn about the basic study of linguistics with a comprehensible notes and their understandings. So here, welcome you all, and let's study. हमारा जो है वो आज के स्टूडेंट्स वो टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही बुनियादी, और ये टॉपिक है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स का पहला टॉपिक। और ये टॉपिक क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक ही टॉपिक बुनियादी तौर पे जहाँ से हम शुरू करेंगे वो यही है कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, सो हाउ टू सॉल्व इट। Let's study from the very basics, because this is a very basics I'm going to just make you understand. So let's start. First of all, this word linguistics is a noun in parts of speech, so this we should have kept in our mind. So ये जो linguistics word है students, ये noun है basically. Yes, here is its basic study. It is taken from Latin language. Linga means tongue, and istics means knowledge or science. ये word जो है वो students Latin language से लिया गया है, linga, जिसकी मायने जो है वो ज़ुबान, और istics की मायने knowledge या science को कहते हैं. So we could say, thus it literally means the scientific study of language. This is the very simplest one that I have given you here on the screen. और ये students देखें, this is for those students those who have been appearing in their examinations for lecturership. उनको बहुत बार ये बुनियादी definition भी आ जाती है कि what is language. So they are supposed to write exactly the same as this one, because there would have been a study of language. Linguistics means language or operation of language, or the scientific study of language. बुनियादी तौर पे ये बड़ा ही आसान लगता है कि हम उस पर लर्न करें, मगर देखें कि टेक्निकल बात है और सिंपल बात यही है कि ये जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है. सो वी हैव बीन स्टडीइंग लैंग्वेज एज अ साइंस. So your answer should be the scientific study of language, and this is one of the very simplest definition of linguistics. Let's study more. According to Robbins, in 1985, linguistics is concerned with human language as a universal and recognizable part of human behavior and of human faculties. According to Robbins, 1985, linguistics जो है ये ताल्लुक़ रखती है इंसान की जो है वो ज़ुबान से, इंसान के बोलने से, या इंसान से कहें कायनाती तरह से, और इंसान के बिहेवियर को जो है वो शो करती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के थ्रू जो है वो लैंग्वेज और ह्यूमन फैकल्टीज़ के थ्रू हम लैंग्वेज के इजहार करते हैं, लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं. सो ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन भी आपको एनुअल एग्जामिनेशन में इवन आ सकती है कि व्हाट लिंग्विस्टिक्स मीन्स according to Robbins in 1985. So your answer, if there are some of the objective answers, so you are supposed to give answer like this. Here
The term linguistics was first attested in 1847 as the scientific study of language. अब यहाँ पे देखें कि लिंग्विस्टिक्स जो है कह रहा है कि पहली बार जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जिसे हम कह रहे हैं वो बना तो वो 1847 में बना. दिस इज द सपोर्टिव सेंटेंस. बिफोर दैट इट वाज द टर्म फिलॉलजी यूज्ड एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. इससे पहले जो है मतलब 1847 से वर्ड फिलॉलजी यूज होता था, जिसका मतलब ये होता था द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. It means it wasn't the scientific study of language before 1847. In 1847, it became the scientific study of language. ये जो है वो this is the basic understanding and difference you will make. Students, there are many different areas of investigations. For instance, means हम जब बात कर रहे होते हैं जो है वो बहुत सारे जो है ना इन्वेस्टिगेशंस की या एरियाज़ की कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, या साइंटिफिक स्टडी जब कह रहे हैं तो साइंस किस तरह से हम लैंग्वेज की या कौन सी एरियाज हम स्टडी करेंगे, तो वो ये हैं. नंबर 1, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स. अच्छा, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम है, study of sounds in simple way, right? So जब हम साउंड्स की बात करेंगे, स्टडी की बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स दिस इज लिंग्विस्टिक्स. और ये जो एरिया है ये फोनेटिक्स या फोनोलॉजी कहलाएगा. इसके बाद सिंटैक्स कहते हैं. दिस इज द सेकंड स्टडी ऑफ आवर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन लिंग्विस्टिक्स, जिसकी मायने है स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. जब हम because this language is composed of the larger units, and those larger units in language are sentences. So study of sentences is called syntax. This is also one of the area of investigation in linguistics. Number 3, meaning system, semantics जिसे कहा जाता है. तो सिमेंटिक्स इज़ वन ऑफ द एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिंग्विस्टिक्स, जिसको हम कहें कि मीनिंग्स की स्टडी ऑफ मीनिंग्स इन लैंग्वेज. सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स. आगे जब हम मतलब डिटेल के साथ हम जो है ना फोनेटिक्स को पढ़ेंगे, फोनोलॉजी को पढ़ेंगे, सिंटेक्स को पढ़ेंगे और सिमेंटिक्स को पढ़ेंगे. हियर इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स को थोड़ा सा जो है वो और वजाहत के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ये. It studies language as a universal and recognizable part of human behavior. Thus, linguistics is that science which studies the origin, organization, nature, and development of language descriptively, historically, comparatively, and explicitly. It formulates the general rules related to the language. यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कह रहा है कि एक कायनाती जो है वो इंसानी बिहेवियरल एक स्टडी है, और लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंस है, और हम इसमें जो है वो लैंग्वेज की जो है वो बुनियाद, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, नेचर या उसकी जो तरक्की जो है, इसको जो है वो लिखने में तारीख़ी तरह से या कंपेयर करके और बड़े ही सफाई से अलहदा से जो है वो देख के हम स्टडी कर रहे होते हैं. और ये जो है वो जनरल रूल्स बनाती, लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज के लिए जनरल रूल्स बनाती है कि लैंग्वेज को जो है वो बोला कैसे जाए, लिखा कैसे जाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स. फिर आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से देखें या समझें कि कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो what is the difference between a knight and nav? Now can you answer these questions students? Just focus कि आप क्या इन सवालात के जवाब दे सकते हैं. What is the difference between a knight and nav? जैसे कि ये क्वेश्चन है. नंबर 2, what do you eat with your ghoti? Do sentences grow on trees? Who taught you to speak?
So linguistics can help us to find the answers. सो देखें, बहुत सारे जो सवालात होते हैं कि भाई हम दो वर्ड्स में डिफरेंस मालूम करते हैं, नाइट का क्या मतलब है, नेव का क्या मतलब है, इनमें डिफरेंस क्या है, राइट? और व्हाट डू यू ईट विद योर अब घोटी, आप जो है वो घोटी के साथ क्या खाते हैं? डू सेंटेंसेस ग्रो ऑन ट्रीज, क्या जो वो सेंटेंसेस जो है वो दरख्तों पे उगते हैं? और आपको जो है वो बोलना किसने सिखाया? सो ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए. सो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी, आर दिस इज द एरिया कि इन सवालात के जवाबात हमें लिंग्विस्टिक्स के अंदर मिलेंगे. तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? And what was that question? What is the difference between a night and nav? Time. Why? Because nav and night both meant boy ones. दोनों की एक वक्त था कि मायने जो है वो बॉय थी, लड़का. ये एक मायने थी, दोनों के एक ही मायने थी. नेव मीन्स बॉय, नाइट मीन्स बॉय. वंस अपॉन अ टाइम means it was a time in history. They now mean opposing things. But now, with the passage of time, after a pace of time, so there has been a difference. Meanings of words and pronunciation change over time. मीनिंग्स जो होते हैं वर्ड्स की और जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये तब्दील होते रहते हैं वक्त के साथ. राइट मीन्स एक वक्त था कि नाइट और नेव की मायने एक ही थी, बट इन दोनों की मायने अब तब्दील हो चुकी है. नेव जो है वो मतलब तारीखी हिसाब से एक वक्त में अ बॉय सर्वेंट और नाइट भी अ बॉय सर्वेंट कहा जाता था. बट टुडे नेव का मतलब विलियन, विलन और ऑनेस्ट पर्सन है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, सॉरी. मगर अब अगर हम देखें तो नेव का मतलब एक विलन और डिसऑनेस्ट पर्सन है, और नाइट का मतलब एक वॉरियर की मायने देता है. यानी बोथ आर हैविंग डिफरेंस. यू सी, नेव इज अ विलन और डिसऑनेस्ट पर्सन. दिस इज एन इमेज ऑफ अ डिसऑनेस्ट और विलन. And night, like in 300 movie, you see the warrior, those were knights. So this is a very positive meaning. Knight is a very positive meaning, and knave is one of the darker meaning. But in history, those meanings were the same, right? So this study, historical study, why words are having differences and what are the meanings. So this study is called linguistics, basically, when we are talking about. Hopefully this would have been a very comprehensive for all of you. This historical linguistics, etymology is the study of historical development of words, which is part of historical linguistics. अब जो हमने बात की वो उसको हम historical linguistics को etymology कहते हैं, और etymology जो है वो कहा जाता है historical development of words, जो कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर तारीखी तरह से आते हैं. तो इस स्टडी को हम एटामोलॉजी कहते हैं, और ये लिंग्विस्टिक्स की स्टडी है. यानी ये एरिया जो है वो दिस इज अ टॉपिक ऑफ लिंग्विस्टिक्स. कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट डू यू ईट विथ घोटी? चिप्स. Why do you eat chips with goti? If you take the gh from laugh, laugh का pronunciation से अगर हम gh लें, laugh means f, or the o from women, when we pronounce women, o from women means f, a, f, and the ti from nation. Ti means sh, sh from nation.
The word goti can be pronounced fish, means fa, a, and sh, fish. We spell some words in English in ways which bear no resemblance to the way they are pronounced. Means how we are going to pronounce this word illogically is actually um, is answered here. Ghoti was invented by the playwright George Bernard Shaw to show the illogicality of English spelling. अब यहाँ पे देखिए घोटी जो है वो बर्नार्ड शाह ने अपने प्ले राइट में जो है वो ये दी थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि इंग्लिश स्पेलिंग की इलॉजिकलिटी को शो करता है। यानी लैंग्वेज में जो प्रोनाउंसिएशन की स्टडी है और वर्ड्स की स्टडी, दिस इज टोटली इलॉजिकल एट ऑल. One cannot understand from where and why the words are having pronunciation, their spellings. So this study is also part of your linguistics, phonetics and phonology. So what we uh, had talked about, this one is actually the study of phonetics and phonology. These are the areas of linguistics, right? These are the areas of linguistics that deals with the study of the sound system of language, phonology, and scientific study of speech processes, phonetics. So this is all about. Again, can you answer this question? Here is another question. Do sentences grow on trees? Answer is yes. Why? Sentences are a structured chain of words. The chain of words, sentences grow on trees, is recognizable as well-formed sentence of English. By contrast, sentences grow trees on. Are trees on grow? Sentences are simply word salad. अब देखिए अगर हम सिंपली कहें कि वर्ड्स जो है वो ट्रीज पे उगते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक बात होगी, राइट? दिस वुड हैव बीन अ चेन ऑफ वर्ड्स, जैसे सेंटेंसेस ग्रो ऑन ट्रीज, ये एक सिस्टमेटिक बात है. मगर अगर हम बात करें इंग्लिश में इसके बरक्स कि सेंटेंसेस ग्रो ट्री ऑन, इस तरह से ये सेंटेंस लिखें, या ट्री ऑन ग्रो सेंटेंसेस इस तरह से लिखें, तो ये एक सैलड बन जाएगा. जैसे हम जो है वो सब्जियों को या पौधों को उखाड़ के कोई चीज़ बनाए, सैलड बन जाता है, मिक्स कर दे तो वो सैलड हो जाता है, तो ये मिक्स सैलड बन गया. बट एग्जैक्टली a sentence complete with the rules is a tree, right? So the answer is yes. Do sentences grow on trees? Yes, because they are very systematic in one way. One way to show that sentences have a structure is to identify which words go together to form units. So on trees is a unit. Where do sentences grow? This is all about. However, the string sentences grow on do not relate to sensible questions and are not units in this sentence. When we are talking about growing sentences on trees, and this is not the sensible talk at all, but actually we have been talking that there is a systematic study of sentences in language. So like this study is called syntax. The study of sentences or words form sentences is called syntax. Like sentences also grow on trees like this. ये देखें, अगर सेंटेंस बना है तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये जो है कोई ट्री ही है. A systematic way is there. Like sentence जो है S means sentence is NP, right? नाउन फ्रेज और नाउन आ सकता है हमारा, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो नाउन फ्रेज या नाउन आ सकता है एक सेंटेंस के अंदर. यहाँ पे बात करें तो वर्ब या वर्ब फ्रेज आ सकता है. फिर हम यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, या कोई प्रपोजिशन आ सकती है, या नाउन फ्रेज आ सकता है, या कोई नाउन आ सकता है. सो दिस इज एग्जैक्टली these rules are like we have been talking about tree. Like ट्री जो है वो एक बड़ा सिस्टमेटिक सा बना हुआ होता है, यहाँ मट्टी से उगता है ऊपर जाता है, तो ये सेंटेंसेस भी इसी तरह से एक सिस्टमेटिकली जो है वो बने होते हैं. और दिस स्टडी इन लिंग्विस्टिक्स इज कॉल्ड syntax. Study of sentences in linguistics is called syntax. Here
This is a list of keys we used there in our this sentence. Likewise, the relation of words in sentences is from a branch of linguistics called syntax. Can you answer this question? Who taught you to speak? अब इस सवाल का जवाब हम सब दे सकते हैं कि हमें ज़ुबान किसने सिखाई है. You did, of course. अगर जो है वो पेरेंट्स पूछ रहे हैं, हम कहेंगे कि आपने सिखाई है. Why? You might think that this is your parents who taught you how to speak, but you have really taught yourself. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप कहें कि आपको ज़ुबान किसने सिखाई है तो आप कहेंगे पेरेंट्स, मगर नहीं, ये कह रहा है कि ये आपने खुद सीखी है. सर्टेनली योर पेरेंट्स ऑफर यू द मॉडल. आपको पेरेंट्स ने जस्ट ऑफर किया, एक मॉडल आपके सामने पेश किया ऑफ लैंग्वेज. और लैंग्वेजेस यू आर गोइंग टू लर्न, but you came into the world equipped with a kind of ready-made language processor that helped you to sort out how the language you were hearing actually worked. मगर लैंग्वेज जो है वो आपके पास हकीकत ये है कि एक प्रोसेसर है जिसके थ्रू आपने खुद की मदद की, सुना, कोशिश की और जो है वो काम करते हुए आप लैंग्वेज सीख गए. Means this is your capability, personal capability of learning a language. So, working out the rules. Have you ever heard a child say, I did it or I bringed it? कभी आपने सुना है कि बच्चे ने इस तरह से कहा हो? What do you think is going on here? आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? They won't have heard their parents saying these words. So where did they come from? Where did they come from? अगर ये words होते नहीं है तो ये कैसे आए? So language acquisition. Actually, this is the branch of linguistics that studies the ways in which children learn language. So ये लैंग्वेज एक्विजिशन का एरिया आ जाता है. ये जो हमने बात की यहाँ पे कि ये कैसे आए वर्ड्स, या हमने बात की कि आपको लैंग्वेज किसने सिखाई है. सो दिस ऑल स्टडी इज द एरिया ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. और language acquisition, this is the branch of linguistics that studies the ways in which children learn language. When linguistics looks at how we learn a second or foreign language, this is called second language acquisition. So हम कैसे जो है वो फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, पढ़ते हैं, और जिसको हम सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं. सेकंड लैंग्वेज वो होती है जो कि आपकी नेटिव या मदर टंग नहीं होती, दूसरी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं या आप फॉरेन लैंग्वेज कहें. तो ये जो स्टडी है कि लैंग्वेज हम कैसे हासिल कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन. दिस इज़ द एरिया इन लिंग्विस्टिक्स विच इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन. Students, again, so what precisely is linguistics? We are going to just concise what we have learned today in linguistics. क्या जो है वो हमने सीखा. In short, linguistics किसे कहेंगे? Linguistics is the science of language. It is a subject whose practitioners devote their energy to understanding why human language is the way it is. They study the history, acquisition, structure, and use of as many languages as possible. It would be nice to study them all. So linguistics जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि ये साइंस है और प्रैक्टिशनर लैंग्वेज की स्टडी कर रहे होते हैं, और वो स्टडी जो है वो लैंग्वेज की तारीखी हवाले से या लैंग्वेज हासिल कैसे की जाती है और उसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये सारी एरियाज जो है वो हमारी लिंग्विस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं. Again, since language enters into almost every area of human activity, the application of linguistics analysis can be extremely broad, encompassing almost any area where language is a practical concern. लैंग्वेज जो है वो हर तरह से हर एरिया इंसानी एक्टिविटी के अंदर जो है वो आ जाती है. यानी हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें लैंग्वेज की मुदाखलत है और उसका इस्तेमाल है, और वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और वो प्रैक्टिकल है.
और फॉर एग्जांपल वो कौन से एरियाज हैं जिसमें लिंग्विस्टिक्स काम आती है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, लैंग्वेज लर्निंग, and these are some of the areas you may read from here, from the slide. These are actually the areas where we have been learning linguistics. So hopefully this would have been a very comprehensible lecture, and informative lecture for all of you. This was a very detailed lecture, students. होपफुली कि आप जो है वो बुनियादी तरह से समझ चुके होंगे कि लिंग्विस्टिक्स है क्या, व्हाट इज़ अ लिंग्विस्टिक्स. दिस वाज ऑल अबाउट. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.